नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशमस्कन्धम् अथ पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्याय। श्रीशुक उवाच कामस्तु वासुदेवांशो धक्तप्राग्युत्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत स एव चादो वैदर्भ्यां कृष्णवीर्यः समुद्भवा प्रत्युप्न इति विख्यात सर्वतो नवमप्पिदो तं शम्बरकामरूपी कृत्वा तोगमनिर्देशं स विदित्वात्मनशत्रं प्रास्योदन्यत्यगाद्गृहं तं निर्जगार बलवान् मीनसो अप्यपरैः सह वृदो जालेन महदा गृहीतो मत्स्यजीविभिः तं शम्बराय कैवर्ता उपाजह्रुरुपायनं सूतामहानसं नीत्वा वद्यन् सुधिदिनाद्भुतं दृष्ट्वा तदुदरे बालं मायावत्यै निवेदयन् नारदो कथेल् सर्वं तस्या शङ्कितचेतसा बालस्य तत्त्वमुत्पत्तिं मत्स्योदरनिवेशनं सा च कामस्य वै पत्नी रतिर्नाम यशस्विनी पत्युर्निर्दग्धदेहस्य देहोत्पत्तिं प्रतीक्षति निरूपिता शम्बरेण सा सुबौधनसाधने कामदेवं शिशुं बुद्ध्वा चक्रे स्नेहं तदार्भगे नादिदीर्घेन कालेन स काष्णीरूढयौवन जनयामास नारेणाभिक्षन्दीनां च विभ्रमं सा तं पदिं पद्मदलाय देक्षणं प्रलम्बबाहुं नरलोकसुन्दरं सव्रीडहासोत्तदिभ्रूवीक्ष्यति प्रीत्योपतस्ते रतिरङ्गसौरतैः तामाह भगवान् काष्णिर्मादस्ते मदिरन्यथा मातृभावमतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा रतिरुवाच भवान् नारायणसुत शम्बरेणाहृतो गृहात् अहं तेऽधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान् प्रभो एष त्वा निर्दशं सिन्दावक्षिपं शम्बरोऽसुर मत्स्योग्रसीत् तदुतरादिह प्राप्तो भवान् प्रभो तमिमं जहि दुर्धर्षं दुर्जयं शत्रुमात्मना माया च तविदं तं च मायाभिर्मोहनादिभिः परिशोचति ते माता कुररीवगतप्रजा पुत्रस्नेहाकुलादीना विवल्सा गौरिवातुरा प्रभाषैवं तदं विद्यां प्रद्युम्नाय महात्मने मायावती महामाया सर्वमायाविनाशिनी स च शम्बरमभेत्य संयुगाय समाह्वयत् अविषेह्यस्तमाक्षेपैः क्षिपन् सञ्जनयन् कलिं सोऽधिक्षिप्तो दुर्वजोभिः पादाहत इवोरग निश्चक्रामगदा पाणिरमशात्ताम्रलोचना गदमाविध्यतरसा प्रत्युम्नाय महात्मने प्रक्षिभ्य विनदन्नाद वज्रनिष्पेषनिष्ठुरं तामापदन्तीं भगवान् प्रत्युप्नो गदयां गदाम् अपास्य शत्रवे क्रुद्ध प्राहिणोद स्वगदां नृप स च मायां समाश्रित्य दैतेयीं मयदर्शिता मुमुजस्त्रमयं वर्षं काष्णो वैहायसोऽसुर बाध्यमानोऽस्त्रवर्षेण रौक्मिणेयो महारथ सत्त्वात्मिका महाविद्यां सर्वमायोपमर्दिनीं ततो गौह्यगगान्धर्व पैशाचोरकराक्षसी प्रायुक्तशतशो दैत्य काष्णिर्व्यथमयत् सता निषादमसि मुद्यम्य सकिरीडं सकुण्डलं शम्बरस्य शिरःकायात् ताम्रशुश्रोजहा जसाहरत आगीर्यमाणोऽतिविजयस्तुवद्भिः कुसुमोत्करैः भार्याम्बरचारिण्या पुरं नीतो विहाय स अन्तःपुरवरं राजन् ललनाशतसङ्कुलं विवेशभक्न्या गगनादिविद्युदेववलाहगां तं दृष्ट्वा जलदश्यामं पीतकौशेयवाससं प्रलम्बबाहुं ताम्राक्षं सुस्मितं रुचिराननं स्वलङ्कृतमुखाम्बोजं नीलवक्रालकालिभिः कृष्णं मत्वा स्त्रिया ह्रीत्वा निलिल्युस्तत्र तत्र अवधार्य शनीरैशल्वैलक्षण्येन योषिता उपजग्मो प्रमुदिता शस्त्रे रत्नं सुविस्मिता अथ तत्रासितापाङ्गी वैदर्भी वल्गुभाषिणी अस्मरत् स्वसुतं नष्टं स्नेहस्नुतपयोधरा कोऽन्ययं नरवैढूर्य कस्य वा कमलेक्षणा
धृतकया वाजठरे केयं लब्ध्वा त्वनेन वा मम चाप्यात्मजो नष्टो नीदोऽयसूदिका गृहात् एतत्तुल्यवयोरूपो यदि जीवति कुत्रचित् कथं त्वनेन सम्प्राप्तं सारूप्यं शार्ङ्गधन्वना आगृत्या विवेर्गत्या सुरहसावलोकनैः स एवा वा भवे नूनं यो मे गर्भे धृतोर्भगा अमुष्मिन् प्रीतिरधिका वामस्फुरति मे भुज एवं मीमांसमानाय वैदर्भ्यां देवकी सुधा देवक्यानगदुन्दुभ्याम् उत्तमश्लोक आगमद विज्ञादार्थोऽपि भगवान् तुष्णीमास जनार्दन नारदो अगधे सर्वं शम्बराहरणादिकं तच्छ्रुत्वा महदाश्चर्यं कृष्णान्तपुरयोषिता अभ्यनन्दन् बहूनब्धा नष्टं मृतमिवागतं देवकी वसुदेवश्च कृष्णरामौ तथा श्रिय दम्पतीतौ परिष्यज्य रुक्मिणी च ययोर्मुदं नष्टं प्रद्युम्नमायातमाकर्ण्यद्वारगौगस अहो मृत इवायादो बालो दिष्ट्येदिहाब्रुवन् यं वै मुहुः भावान् तन्मातरो यदभजन्यहरूढभावा चित्रं न तद्खलु रमास्पदबिम्बबिम्बे कामे स्मरेक्षिविषये किमुतान्यनाय श्रीहरये नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे प्रत्युज्ञोत्पत्तिनिरूपणं नाम पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।